Hello students, I hope all of you fine and preparing with zeal. So today we are going to talk about a problem which most of the UPSC aspirants are facing. Okay, it starts from how to start it, goes till how to improve it. No prize for guessing, that's answer writing. Okay, so everyone, whoever is preparing, and they are so much indulged into the preparation. They want to get the best out of them. They have this कि मेंस की तैयारी कैसे हो रही है. Okay, and मेंस की तैयारी which means answer writing. Okay, so when we talk about answer writing, today we will talk about those who are beginners. Beginners in the sense कि हमने पढ़ लिया है सारा का सारा सिलेबस, अब हम क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हैं, but still we are not able to connect. I'll come to this. Okay, कुछ ऐसे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे वांट टू सी यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि जब भी हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं आई थिंक, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दैट यूपीएससी क्या कर रही है, कैसे क्वेश्चन पूछती है, हर साल क्या ऐसा है जो कहते हैं कि इट्स टू टफ. ओके, इट इज एक्चुअली ठीक है, बट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. देयर आर मेनी हु हैव सेट many big examples, great examples I would say. So आज की प्रॉब्लम जो आंसर राइटिंग है, ये आज की नहीं, वैसे तो बहुत लंबी प्रॉब्लम है. हम बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे. पहला, why are you facing this problem? First is you're hoping for the best from your side. Okay, it is good to have the positive energy, but फर्स्ट आंसर को टॉपर के आंसर के साथ कंपेयर करना एंड देन सोचना कि मेरा अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, मैंने सिलेबस पढ़ लिया है, इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली. आप एक टाइम पे एक ही चीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. वन एट अ टाइम इज द बेस्ट आई फील. सो हियर द सोल्यूशन फॉर दिस इज टू स्टार्ट. इट गोज टू दोज ऑल्सो जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं. इफ एट ऑल दे पिक अ क्वेश्चन, कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन अगर उठाते हैं या किसी भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अगर वो उठाते हैं, तो दे आर ग्रेजुएट्स. अगर उनको एक स्टेटमेंट मिलती है तो डेफिनेटली वो इस स्टेटमेंट को समझ जाएंगे एंड दे कैन स्टार्ट इट. दे मे नॉट राइट द बेस्ट आंसर आउट ऑफ इट, बट दे कैन राइट समथिंग, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग. क्योंकि द सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस when you will complete 2 to 3 subjects and then you will go for connectivity and then you would not find the connectivity, then you'll start blaming yourself. Rather, the solution is to start today. Okay, without thinking answer kaisa hoga. Okay, second thing is consistency. Okay, consistency is a problem. We plan things and accordingly we are doing it, and the other day we start something else, feeling that we can make it much better in this way is a problem. You are getting a good solution or you are not getting a good solution, you need to write at least 3 to 4 questions. बुरे अच्छे जैसे भी हों, at least 2 to 3 questions you can attempt. Definitely there are many serious aspirants here. Third thing is, why are we not getting this consistency? Reason behind it is that we are not getting it corrected properly. Reason behind it is, if at all we are getting it corrected, then nobody is there to talk about it. Another reason for it is, I am not feeling comfortable to talk about it to the mentor even, that ये बहुत छोटी problem है, क्या पता कैसे होगा, and maybe others are writing, तो maybe I'm not doing well. So these are the things जिनको आपको हटाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है. Today मैं जो भी I'm going to, whatever I'm discussing here now, right now, it's a very generalistic discussion, and it may not or may relate to your preparation point of view. But अगर relate कर पा रहे हैं तो definitely try this, or if you're not relating with it, then you can try your own way as well, that's very sure. So here one important part
out of all the 3 points is confidence. Okay, engendering confidence into yourself is a very crucial task. Okay, cause हम नहीं कर पा, हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, तो डेफिनेटली क्रूशियल ही है. सो यहाँ पे अगर हम कॉन्फिडेंस एंजेंडर करना चाहते हैं, तो एक चीज हम कर सकते हैं कि अगर हम एक लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम में शॉर्ट टर्म गोल में अपनी एक बड़ी सी चीज को कवर कर ले, देन इट मेक्स अस that feeling, it gives us that feeling that we can do something. Okay, so the same idea we have invoked in SUGAM is a program by Eden IAS, which means easy, and it's a specifically designed program for beginners who are willing to start with their answer writing, or who they have completed the syllabus and now they are willing to go ahead with the answer writing portion. सुगम की की पॉइंट्स हैं 5 मंथ्स के अंदर एंटायर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का दौरा कर लेना, राइट. स्टार्टिंग विद पेपर 1 टू पेपर 4 वी विल बी डेडिकेटिंग 1 वीक फॉर 1 सब्जेक्ट. ओके, हर सब्जेक्ट कवर करने के बाद, लाइक नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, कई लोगों का बीच में सोच रहे होंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल टू कवर द एंटायर ज्योग्राफी इन 1 वीक और एंटायर. यस, यू कैन at least give it an idea of going through a question. Okay, so whenever we are attempting one particular question, we will be covering a particular part of the syllabus. So a syllabus, a well defined syllabus would be given to the students. वहाँ पे वो अपने उस एरिया को पर्टिकुलर कवर कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट डे ज्योग्राफी है, सो ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे और उससे वो इन एंड अराउंड पढ़ के वहाँ लिख सकते हैं. देन दे विल गेट द मॉडल आंसर, दे विल गेट दिस discussed with their teachers. They can have personal discussions as well, जहाँ पे वो छोटे वाले questions और छोटे वाले ideas where you hesitate can be asked, and they will be regular. cause 72 hours में आपके पेपर्स चेक होके आपको मिलेंगे and accordingly आप अपने मॉडल आंसर्स के साथ उनको मैच करके कर सकते हैं. तो 5 महीने and you have covered the entire GS paper 1, 2, 3, 4. ये दोनों ही तरह से काम आता है. कि अगर आपने 2 पार्ट ऑफ द एक दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो एक टाइम आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, दूसरा टाइम आप डेडिकेट कर सकते हैं एक अच्छी रिसर्च के ऊपर. रिसर्च through question, सारे you will dive into the syllabus and then you will come out of the syllabus by writing more than 500 questions, and that makes your life easy, engenders confidence in you, and you will do the best, right? So it can help those students जो अपना स्टार्ट भी करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, they can start with it. क्योंकि अगर एक झलक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से हमें आइडिया मिल सकता है, तो हम एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ शुरू करके भी सारे सिलेबस का आइडिया ले सकते हैं. उसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको पता चल जाएगा. एंड इट कैन बी कॉल्ड एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, कि आप प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नॉर्मली हम यही, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो लिखना शुरू करते हैं. दोनों चीज़ें असल काफ़ी ट्रेंड में है. यू कैन ट्राई एनी ऑफ इट, and you can find the brochure on Eden IAS channel website www.edenis.com. और आपके वही टीचर्स जो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, they are going to discuss this program with you, and you can download the syllabus as well from the website. So start with answer writing, and don't say this that how to start. The only thing to face, or only idea to face your problem is to get into the problem, face it, and then come out of the problem. All the best.